हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर 37 पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में हम बुक 3 डिस्कस करेंगे, निकोमेकियन एथिक्स बाय एरिस्टोटल। हमने लास्ट एपिसोड्स में बुक 1 और बुक 2 को काफ़ी थॉरली एग्जामिन किया था, और इस पॉडकास्ट में हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि बुक 3 को उसी तरीके से थॉरली एग्जामिन करें और इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं वो आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि अब्दुल्ला व्हेन यू आर रीडिंग बुक 3 उसमें बहुत ज़्यादा आप कह लो कि जो एक मेन थीम होता है एक चैप्टर का, उसके अलावा एरिस्टोटल starts going into deep discussions about that, we can say moral choice or desire that we are going to discuss in this chapter. So we are going to stick to the point because we are going to discuss what's the main thing that we should know while going towards the other chapters. सो यस मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से बुक 3 के चैप्टर 1 से, विच इज़ अबाउट वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस एंड नॉन वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस को हम कह सकते हैं रज़ा कराना, उर्दू में रज़ा कराना एक्शन मतलब कि काम। इनवॉलंटरी एक्शंस को हम कह सकते हैं, कह लो अज़ खुद। और नॉन वॉलंटरी एक्शंस को हम कह सकते हैं गैर रज़ा कराना। So I'm going to tell you the difference between voluntary, involuntary and non-voluntary actions first of all. So voluntary actions वो actions हैं जिसको हम खुद चूज़ करते हैं कि हम वो actions करें या ना करें। और इन एक्शंस में हमारी डेलिब्रेशन, हमारी कॉमन सेंस यूज़ होती है। वी डू वे और ऑप्शंस वेदर वी शुड डू दिस एक्शंस और नॉट। और इन एक्शंस पे हमारा कंट्रोल भी होता है। हमारा कंट्रोल होता है कि वी प्रोसीड टू डू द फॉलोइंग एक्शन और वी डोंट प्रोसीड टू डू द फॉलोइंग एक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द डेलिब्रेशन और द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन वी चूज़ टू एग्जामिन द चॉइसेस। उसके अलावा आता है इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे कि मैंने बताया था कि अज़ खुद ये ऐसे एक्शंस होते हैं कि हम इनको चूज़ नहीं करते। वी डोंट रियली चूज़ टू डू दैम। हमारा हम अगर हमारे इख्तियार में हो तो हम ये एक्शन ना करें, मगर मसला ये कि हमारे इख्तियार में नहीं होता। वी हैव टू डू दिस काइंड ऑफ एक्शंस। दीज एक्शंस, हमें ये एक्शंस ज़बरदस्ती भी कोई हमसे करवा सकता है। वी आर फोर्स्ड टू डू दीज एक्शंस under certain obligations. For example, you don't really want to stop on the red light. You just want to go fast as possible towards your job, but you have to stop because you have an obligation. You don't really have any choice, but you are forced to do so under the obligation of law. आगे जो एक्शंस आते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन वॉलंटरी एक्शंस। हम पहले तो ये कि हम वी डोंट रियली चूज टू डू दिस एक्शंस, और मगर हमारा इन पे स्टिल कंट्रोल होता है वेदर वी डू देम और नॉट। It can be like sneezing, blinking. We can stop our sneeze, but we choose to do it. But yes, they are still under our control, but we may not choose to do these actions. तो पहले तो हमने बता दिया कि वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी एक्शंस कौन से हैं। तो आगे जाके अरिस्टोटल जैसे इन सब तीनों एक्शंस के बीच में डिस्टिंक्शन कर देता है, वो ये ऐड करता है कि अगर हम कोई भी एक्शन जो है हम जहालियत में करें, ज़रूरी इट मस्ट बी देन नॉन वॉलंटरी। नॉन वॉलंटरी जैसे कि मैंने बताया था कि वी डू नॉट चूज टू डू दैम, बट वी स्टिल डू दैम। सो अगर हम कोई भी जहालियत में कोई काम करते हैं, इट इट मे बी नॉन वॉलंटरी। और इनवॉलंटरी एक्शन, क्योंकि इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनकी वजह से हमें दुख, हमें पेन भी मिल सकता है। वी ऑल्सो मे fear repentance while doing these kind of actions, because we are feeling pain while doing these actions. और अगर हमारे कंट्रोल में हो, वी हैव इन हमारे ऑप्शन ऑफ कंट्रोल, तो इट बिकम्स इनवॉलंटरी। दूसरा क्या है, ही स्टार्स डिस्टिंक्शन बिटवीन इग्नोरेंस, एक्टिंग थ्रू इग्नोरेंस एंड एक्टिंग ऑफ इग्नोरेंस। कि अगर हम एक काम जहालियत में करते हैं, या हम इग्नोरेंस में करते हैं, या फिर इग्नोरेंस की वजह से करते हैं। इसमें आपको एग्जांपल आई कैन गिव यू लाइक दिस, कि जब एक पर्सन when a person is doing an act in ignorance, they don't really fully understand the implications of their actions. ठीक है, like a person might be trying to help an injured man, but he is not fully trained. He's not a fully trained doctor, and while trying to help an injured guy, he might
cause them harm. So इस तरह का जो एक्शन होगा, it is caused in ignorance. और जो एक्शन होता है which is caused because of ignorance, it can be caused because of lack of knowledge. Like a sleepwalker, अगर कोई बंदा है वो नींद में चल रहा है, he can trip over things, or he can cause harm to himself, and he's doing those actions because he has the lack of knowledge. आगे जाके चैप्टर 2 में एरिस्टोटल डिस्कस करता है चॉइस, डिज़ायर, टेम्पर और ओपिनियन को. तो as I already told you, choice refers to a deliberate decision by an individual, which is an action of will. चॉइस इज़ अ डेलिब्रेट, लाइक चॉइस, हम कोई भी जब एक्शन चूज़ करते हैं, हम एक प्रोसेस डेलिब्रेशन के थ्रू हम ऑप्शंस को वे करके वो एक्शन करते हैं. सो चॉइस, whenever choice is involved in an action, the action becomes voluntary because we choose to do that action. Desire, on the other hand, you can say that desire is an internal state of wanting something or wishing for something, और ये हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. इट कैन बी वॉलेंटरी इन दैट सेंस कि uh, जो बंदा जो है ही लाइक अ पर्सन दैट डज समथिंग under the compulsion of desire, he doesn't really fully understand his actions, so these can be involuntary in that sense. But it can be voluntary in other sense कि हर बंदे के अंदर जो है, they have different type of preferences, they have this different inclinations, उनकी different choices होती हैं. तो it can vary from one person to person. Abdullah, my choices can be different to your choices. Same ज़रूरी नहीं है कि सब बंदों की choices same हो. So these choices can make an action voluntary in that sense as well. उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं टेम्पर को. टेम्पर इमोशनल स्टेट सच एज एंगर, इट कैन बी फियर एज वेल, और ये हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है. तो अगर हम एक एक्शन करते हैं बिकॉज वी आर हॉट हेडेड और बिकॉज वी आर एंग्री, those actions can be deemed involuntary because we did that action under, you can say, under the state of anger, and we were not really fully aware of the consequences of the action we were doing. So these can be deemed involuntary in that sense. आखिर में डिस्कस करता है एरिस्टोटल ओपिनियंस को. ओपिनियंस आर सेट्स ऑफ आवर बिलीव्स और जजमेंट्स. Opinions, opinion is not something you can say factual. Opinion varies from one person to another. So द जब हमारा कोई फाइनल एक्ट होता है, जब हम कोई भी फाइनल एक्शन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ओपिनियन के मुताबिक करें, बिकॉज वी नो कि हमारा जो ओपिनियन है, इट कैन बी राइट और रॉन्ग. सो एंड हम कभी भी अपने डेलिब्रेट प्रोसेस में ओपिनियन को ऐड नहीं करते. सम पीपल माइट डू, बट मोस्ट ऑफ पीपल दे डोंट रियली डू इट. सो ओवरऑल ये जो डिज़ायर, चॉइस, टेम्पर और ये सारे ओपिनियंस हैं, it depends upon the degree of control an individual has over their emotional state. That's what Aristotle says. So after that, going towards the book number 3, uh, Aristotle discusses the process of deliberation. What is deliberation? So Aristotle ये ऐड करता है कि जो deliberation के ये है, it's a thoughtful process. एक thoughtful process है जिसमें हम अपने options को weigh करते हैं, और इस प्रोसेस के बीच में वी कैन यूज अवर लॉजिक एंड रीजन एज वेल. चॉइस चॉइस और डेलिब्रेशन के अंदर कोई भी चीज़ जो की होती है, वो एक इम्पल्सिव एक्शन नहीं होता, बट वो एक इंटेंशनल एक्शन होता है, और इट इज़ बेस्ड ऑन आवर रीजनिंग एंड जजमेंट. सो एन एबिलिटी टू डेलिब्रेट, सोच समझ के कोई काम करना, अपने ऑप्शंस को वे करना, इट इज़ रियली एसेंशियल. हर किसी के लिए एसेंशियल है कि whenever he's making a choice, he has to use the process of deliberation of weighing his options. तो इट इज़ सो यहाँ आगे जाके अरिस्टोटल ये ऐड करता है कि ये जो प्रोसेस है डेलिब्रेशन का, हम अपने ऑप्शंस को डेलिब्रेट करना, इसके अलावा जजमेंट यूज़ करना, रीजनिंग यूज़ करना, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट in our moral decision making. It's you can say it makes us pious or virtuous and a licentious or evil person, depending upon
our, you can say, our judgment and reasoning and our deliberation before we carry on our action, because एक जो अच्छा इंसान होगा, before, for example, he would deliberate his options, he would he would judge his options before doing a bad deed. On the other hand, अगर एक evil इंसान है, he wouldn't really carefully deliberate his options because he doesn't really care about them or he has no knowledge about them. सो ये जो प्रोसेस है डेलिब्रेशन का, जजमेंट का और रीजनिंग का, ये एक अक्लमंद आदमी के अंदर ही हो सकता है, एक जाहिल आदमी में नहीं हो सकता। और यही जो है, ये हम हमारे हमारे अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर वर्चुअस लोगों को और ईवल लोगों को एक अलग करता है। आगे जाके एरिस्टोटल ये कहता है कि जो डेलिब्रेशन का जो प्रोसेस है, ये हमेशा वजूहात या फिर असबाब के साथ जुड़ा हुआ होता है। असबाब के साथ इस तरह जुड़ा हुआ हो, इट्स नॉट कंसर्न विद द एंड रिजल्ट ऑफ अवर, और एंड रिजल्ट और अवर गोल। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा his final goal is to achieve a healthy body, तो he would choose the process of deliberation or process of reasoning or judgment in dieting, in going to gym, in working out, so that he could achieve his final goal। उसका वो ये नहीं करेगा, वो अपना उसका जो प्रोसेस होगा डेलिब्रेशन का, it would be a process of finding appropriate means, या आप कह लो appropriate ways to achieve his goal, basically। So yes, that's it। So deliberation is all about possibilities and finding ways to achieve our goals। आगे जाके क्विकली बुक नंबर 4 पे uh, Aristotle discusses about actual good and apparent good। Actual good is basically Numan, uh, book four से पहले there's one or two things about no, voluntary no, and non-voluntary actions no, which sorry, we I was going to chapter 4 of my book 4 बाबर कह रहा हूँ। I'm अच्छा still on, अच्छा book number 3। I यही was मैंने कहा just on ब्रो नहीं, I was क्या just ही on बोल chapter रहे 4 of book number 3। तो yes, यहाँ के Aristotle discusses about apparent good and actual good। Actual good, you can say, are universal truths, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। दिस इज एन एक्चुअल गुड, दिस इज एन एक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज is a universally recognized good, like knowledge is a universally recognized good। uh, but apparent goods, so a apparent good, it's based upon our opinions, or it is something that appears good to us individually। This can be based on our opinions, our judgments, or our mental capabilities as well। So this may be true, or this may not be true as well। Like कुछ लोग जो कहते हैं, वो कहते हैं कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, पैसा is the key to happiness, money is the key to happiness, but this is not an apparent good, this is not an universally accepted good। Your opinion must be another। तुम कुछ और सोच सकते हो, you must find peace in something else, or you must find happiness in something else। So apparent goods are different for every individual, rather than, you can say, actual goods which are universally established amongst humans। Do you want to add anything over here? अच्छा हमारा माइक ऑफ था या he recounts on the different kinds of pleasures एक apparent pleasures होते हैं apparent goods होते हैं which are primarily your lowly desires such as your senses of touch, your sense of smell, your senses of sight, your lowly desires, and your apparent goods only revolve around these senses of touch. Yeah. इसके अलावा ही says कि देर एक एक डिसोनेंस है आप कह सकते हो बिटवीन व्हाट इज एक्चुअली राइट एंड व्हाट ओनली सीम्स राइट टू यू। फॉर एग्जांपल एक प्लेजर की बात कर लो तो देर आर सम प्लेजर्स व्हिच आर bad for you but you think they are good for you, such as the pleasures of the body, like I talked about the pleasures of the senses, or but the pleasures that are actually good for you might be
the pleasure that you get from doing good things. Like if you're a virtuous person, अगर आप एक virtuous इंसान हो, तो you might find pleasure in being virtuous. Or you, if you if you like to call yourself intellectual, for example, so you find pleasure in reading books, या फिर talking about good things, sitting with people who are, more learned than you and trying to learn from them. So there is a kind of difference between the right pleasures and the wrong pleasures. So Aristotle talks about knowing the right pleasures and abstaining from the wrong ones. And this is how you आप कह सकते हो cultivate virtue. Because if you do not want to approach it from the habitual process वाला route, where शुरू में Aristotle कहता है कि you can cultivate virtue by constant practice and by consistency. But if you do not want to approach it from that route, what you can do is you can contemplate on the many vices that are in your life, whether they be in your behavioral patterns or the things that you do on a regular basis. And then you minus those things from your personality, so that what would remain would neither be vicious nor virtuous. तो इसके अलावा वो अगेन बात करता है अबाउट द गोल्डन मीन, लाइक यू टॉक्ड अबाउट द गोल्डन मीन, the midpoint between sufficiency and deficiency. That is what Aristotle calls virtue. जिस तरह courage के केस में sufficiency is rashness and deficiency is, आप कह लो fearlessness, नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे cowardice. So yeah, इसके अलावा there was one thing I would like to add to the three kinds of actions जो तुमने बताए, voluntary, non-voluntary और involuntary. It's like अगर आप एक काम कर रहे हो एंड obviously choice and deliberation precedes an action, लेकिन if you're making that choice एंड वो अगर आप में वो चॉइस मेक कर रहे हो, तो यू वुड कॉल दैट एक्शन वॉलंटरी. लेकिन ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल खुद कहता है कि vices and virtues are not innate, वो आप उनके साथ पैदा नहीं होते हो. You cultivate both of them through practice and consistency. You can cultivate virtue by practice, you can cultivate vices by practice as well. अगर आपने माँ बाप को अपने देखा है कुछ काम करते हुए, something unethical, something which is voluntary but not good for them, you might cultivate those same vices. And so 10 years later, 15 years later, 20 years later, you might repeat those mistakes or you might repeat those vices. You might not recognize that those vices are actually vices. And so your action is voluntary, but it was not in that sense. अगर आप purely philosophical हो जाओ, it might not have been your own choice to make. Because obviously we know about the doctrine of causal determinism. Whatever happens to you, you become that. Tragedy comes your way, you become the tragedy. You become some sort of a messed up person who is kind of not aware of why they do what they do. They do not know about their thinking process, about their behavioral patterns. And so for example, आप कह लो मिसाल दिमाग में आ नहीं रही है, but something happened in your life long ago and it made you viable to choosing several different options out of several different options, and you'll always repeat those options, you'll always repeat those choices when presented with a similar situation, जिसकी वजह से आपकी टेंडेंसी है कि अच्छा आपने इस तरह की चॉइस को चूज करना है when confronted with a similar situation and not any other option. इसकी वजह से आई थिंक कि even though Aristotle says here कि voluntary is strictly black and white in the sense कि choice है, non-voluntary and voluntary strictly कि एक में choice है, ignorance है, दूसरी में choice नहीं है, ignorance नहीं है. But I think कि it goes much deeper than that. Aristotle फिर उसके बाद बात करता है, क्विकली मूव ऑन कर जाता है अबाउट चॉइस, फिर आगे वो डिलिब्रेशन की बात करता है, फिर गोल्डन मीन की बात करता है, फिर द अल्टीमेट गुड्स एंड ट्रुथ्स की बात करता है. So yeah, that should have been something that he could have gone deeper into. Okay, the extent to which, even though on the surface level you did make a choice, but that choice was not yours to make. So therefore, the action is no more voluntary. It could be said to be non-voluntary. Yeah, इसके अलावा yeah, he goes at length about the golden mean, which we've already discussed. So yeah, what do you think about that, Numan? वैसे कि the actions जो even though voluntary हैं on the surface level, but there's more to it.
um, for example, a person who is not socialized to a good extent in their early adulthood. So though they will, develop a kind of a personality, introverted personality, ke they'll swear off of friendships and relationships, and that is even though a choice that they on the surface level seem to make voluntarily, but it goes much deeper than that. Stupid example, obviously, that was just at the top of Abdullah, my head. that person would be carrying out his actions in, you can say, uh, those actions might be Abdullah involuntary because he's doing those actions in ignorance. ओके बिकॉज जो समझता है वो वैसा नहीं बिकॉज जो उसके सेट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन सेट्स ऑफ रूल्स फॉर सोशल इंटरेक्शंस हैं वो कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं है और ही इज़ रॉन्ग इन दैट एंड द एक्शंस ही आर डूइंग इज इन you can say in state of ignorance. It's not doing in ignorance but he is doing because of ignorance. So these actions because so you can say his actions are sorry not involuntary non-voluntary. So because he's doing those because of his ignorance. तो जो तुमने बिल्कुल सही कहा वो तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात तुमने हाईलाइट कर दी कि ये जो मॉरल जजमेंट और चॉइस का जो एक प्रोसीजर है इट्स नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर दैट्स व्हाट एरिस्टोटल सेज और अगर ये गिफ्ट होता नेचर का और हमारे जो वर्च्यूज़ हैं ये भी फिर वॉलंटरी ना होते इन सम केसेस दीज आर अ गिफ्ट ऑफ नेचर लाइक अगर एक बच्चा है वो ही इज़ वेरी पायस ही और उसका जो हिज पायसनेस कम्स फ्रॉम हिज फैमिली or his the people he grew up with the people used to he used to live with उनको देखते देखते his habits became उसने बार बार अच्छे और पायस एक्ट कर करके अपनी एक हैबिट बिल्ड की और उस हैबिट की वजह से वो वर्चुअस बन गया देन इट इन दोस टर्म्स इट कैन बी अ गिफ्ट ऑफ नेचर but not in every case moral judgment और डेलिब्रेशन या फिर चॉइस का जो एक पहलू है इट्स नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर क्योंकि अगर ये गिफ्ट ऑफ नेचर होता तो फिर हम किसी को आप कह लो रिवॉर्ड ना करते या हम किसी को प्रेज ना करते बिकॉज ऑफ देयर वर्चुअस एक्ट्स वी नो दैट दिस इज नॉट दिस इज नॉट entirely a gift from nature that is why हम लोगों को पनिश भी करते हैं on doing bad deeds और doing evil deeds और हम लोगों को रिवॉर्ड भी करते हैं या फिर हम लोगों को आप कह लो प्रेज भी करते हैं बिकॉज ऑफ देयर गुड डीड्स व्हाट डू यू थिंक अब्दुल्ला हम्म, यार रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली, देखो एक स्पेक्ट्रम है ना, अगर गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर का, तो उसकी बिल्कुल एंड पे आती है रिवॉर्ड और पनिशमेंट ऑन ऑन अ सिविल लेवल। अगर आप बात करो ऑफ पनिशमेंट्स या क्राइम्स तक चले जाओ तो वो बहुत एक्सट्रीम है ऑफ बैड बिहेवियर। तो फॉर एग्जांपल इफ पीपल डू बैड थिंग्स एंड दे गो अननोटिस्ड, इन द सेंस कि वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो छुप के कर रहे हैं, तो दैट विल ओनली रीइंफोर्स देयर बिहेवियर बिकॉज ऑब्वियसली पनिशमेंट या रिवॉर्ड वाला चक्कर है। या फिर वो उस एक्सटेंड का है ही नहीं कि आप उसको अननोटिस जाने दो। फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन डज अ क्राइम आउट ऑफ इग्नोरेंस, चलो, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल फर्दर एक्सट्रीम पे था एंड इट इट वेंट नोटिस्ड, सो इट हैड टू बी पनिश्ड। इवन दो आप एक कह लो कि अगर एक इंसान है, वो गुजर है सड़क पे, वो कहता है अच्छा यार आज मैं इसका कत्ल करूंगा, इट इजंट लाइक ये 40 साल का इंसान है और उस पूरी जिंदगी ही वाज अ गुड वर्चुअस मैन, और 40 साल के बाद इट क्लिक्ड एंड ही सेड कि अच्छा आई एम गोना मर्डर समवन। It was an entire process through which he became a criminal. And do you should you care about what his life looked like before he committed that action? What made him do it? वो इंसान रेपिस्ट है, मर्डर है, वो क्यों मना? Not really, क्योंकि it lies so far towards the end of the spectrum of violence या फिर of bad behavior कि that person still had a choice। क्योंकि अगर आप एक सिविल सोसाइटी में रह रहे हो, you still know what the good is and the bad is। अगर हम दोबारा एंड वाली स्पेक्ट्रम की चीज़ों की बात करें, अबाउट स्मॉलर बिट्स ऑफ बैड बिहेवियर या फिर गुड थिंग्स लाएंगे, चलो फिर भी समवेयर टुवर्ड द मिडल, आई थिंक सो। लेकिन उससे भी कुछ कम इंटेंसिटी में इफ देयर इज समथिंग बैड, तो क्योंकि दैट पर्सन माइट हैव टोटली बीन इग्नोरेंट, उसको पता ही ना हो कि अच्छा देयर इज दिस थिंग व्हिच एक्चुअली क्लासिफाइज एज अ बैड थिंग, तो दे
might be in ignorance. लेकिन obviously reward और punishment वाला scene ये है कि a person comes across the truth about that thing कि अच्छा this thing is bad, so अगर वो crime करते हैं तो they should be punished for it. Abdullah, yes, who makes yes, I completely understand you. What were you trying to say? And it really makes sense. और इसमें एक पहलू उसका भी है, metaphysics का भी है, मगर I won't really discuss that because it depends all your belief on nature or believe in God. तो वी आर जस्ट स्टिकिंग टू फिलोसफी, सो मैं उस पार्ट को डिस्कस नहीं करूँगा, मगर वी कैन डिस्कस दैट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप कह रहे हो कि तो ये जैसे कि तुमने कहा कि अगर एक हम कोई एक्ट है एंड वी डू इट टू द एक्सट्रीम दैट गोस नोटिस्ड और हमें उसके लिए फिर पनिश किया जाता है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो पॉइंटेड आउट द एक्ट्स दैट वी कीप डूइंग इन मॉडरेशन, इवन द इवल एक्ट्स जिनको हम मॉडरेशन के अंदर कैरी आउट करते रहते हैं और लोगों से छुप के कैरी आउट करते रहते हैं। तो and we can still be unpunished throughout our life. You are really right in this. I 100% agree with it. और मगर उसमें एक और चीज़ ये भी तो आ सकती है that the person doing those things, those evils in moderation can also have some, you can say, impact psychologically on himself, because he carries the burden of things that he does, और उसको पता है कि वो क्या करता है रात की तारकी में या कमरे में छुप के, और वही जो चीज़ है वो फिर उसके ऊपर बर्डन बन बन के उसकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार इस केस में चलो, अगर उसको पता है कि वो क्या कर रहा है तो वो वॉलंटरी है, क्योंकि वो इग्नोरेंस में नहीं है एनीमोर। सो दैट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन, एंड डिपेंड करता है कि व्हाट इंटेंसिटी ऑफ प्लेजर इज ही डिराइविंग फ्रॉम दोज थिंग्स, क्योंकि इफ़ ही इज़ रिपीटिंग दोज थिंग्स तो ही हैज़ एन एंड इन माइंड। इफ़ ही हैज़ एन एंड इन माइंड तो उस एंड की कोई वैल्यू है, उसका कोई प्लेजर है एसोसिएटेड विद इट, वह बेशक फिजिकल हो या मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो। तो इफ़ दैट pleasure exceeds the pain या फिर guilt of doing those things repeatedly, तो that person is likely to repeat those mistakes. वो अगर उसको पता भी चल रहा है अच्छा आई शुड नॉट बी डूइंग those things, ये मेरी हैबिट्स बन चुकी हुई हैं या वेरी डीप पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी बन चुकी हैं, बट इफ द प्रोज एक्सीड द कॉन्स, अगर आप इस लैंग्वेज में कह लो, तो दैट पर्सन वुड नॉट स्टॉप until he is stopped by someone else, या फिर by law या फिर by someone else or advised not to do that thing. तो it still, ये जो रैशनैलिटी है ना, टू अंडरस्टैंड व्हाई यू व्हाट यू डू एंड देन व्हाई यू डू दोस थिंग्स, यार इंसान में नहीं होती। बिकॉज एक एक रिवर है ना, वो बड़ा स्मूथली चल रहा है, वो तभी अपना रास्ता बदलेगा जब कोई चट्टान या कोई पत्थर आएगी सामने, उसका रास्ता बदलेगी। तो इट्स वेरी इजी टू be in the flow, okay, you just do what you do, or not be stopped by anything. But at some time it becomes important for you to reflect and to contemplate that these are the things I do, now categorize them objectively not subjectively। अगर आप किसी का harm भी नहीं कर रहे, but many vices do not include harming someone else, it just corrupts your soul, that's it. So Abdullah, yeah, what about that's it. that person who is corrupted to that point? Yeah, he knows he's doing something wrong, but he doesn't care. So, and he's doing those evils in moderation. What do you think the end of that person is? यार इसमें काफ़ी कंपोनेंट्स हैं, रिलीजन का भी कंपोनेंट आता है, रिडेम्पशन वाला। अगर आप अपने आप को रिडीम करने जा रहे हो कि अच्छा मैंने इतनी अपनी सिग्निफिकेंट पार्ट गुजार दी ज़िंदगी का ऑन डूइंग दीज थिंग्स जो कि ऑब्जेक्टिवली विशियस हैं, गलत चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं। नाउ हाउ डू आई कम बैक फ्रॉम दैट? अगर एक इंसान है हु हैज़ एथिस्टिक टेंडेंसीज, तो वो कहेगा यार फॉर व्हाट शुड आई नॉट डू दीज थिंग्स? मुझे प्लेजर मिल रहा है, और मैं अगर मुझे गिल्ट भी होता है कभी बाज़ औक़ात, मुझे रिफ्लेक्ट मैं करता हूँ इस पे कि अच्छा मुझे गिल्ट है और आई शुड नॉट बी डूइंग दोस थिंग्स, बट व्हाई वुड ही स्टॉप? अगर उसके पास कोई इस तरह का आइडिया नहीं है ऑफ रिडेम्पशन, बेशक रिलीजियस वाली साइड पे चले जाए या फिर टू डू एज मच गुड एज पॉसिबल टू कैंसल आउट ऑल द बैड दैट ही हैज डन। इफ इट डज नॉट हैव अ रिडेम्पटिव पाथ इन माइंड, तो दैट पर्सन वो क्यों क्यों करेगा, क्यों रुकेगा वो फ्रॉम डूइंग ऑल दोस बैड थिंग्स? ही विल ओनली फर्दर करप्ट हिज सोल। No, but I'm talking about certain people, जिनकी जो है वो सोल करप्ट हो चुकी है,
or they don't really care what's right and what's wrong, and they keep doing those evil acts in moderation. ठीक है, वो करते रहते हैं. What do you think the end of such person is? Can he, इन would he? इग्नोरेंस या फिर दे No, आर डिसकॉन्शियस ऑफ इट. he knows, but he doesn't care, and he continues to do those acts. So what do you think, Abdullah? ऐसे बंदे को क्या, कौन पकड़ेगा ऐसे बंदे को? ऐसे बंदे का end क्या होगा फिर? Does that end यार बट लाइक वी involves टॉक्ड involves अबाउट. some kind of metaphysics, मतलब एक some kind of karma from nature, or from some kind of wrath from God? What do you think, Abdullah? यार लाइक वी सेड ये मॉडरेशन वाली चीज़ जो है ना, देयर इज़ नो मॉडरेशन इफ इट कम्स टू वाइस. क्योंकि एनी वाइस इफ इट इज़ अ वाइस, इट डज नॉट हैव अ गोल्डन मीन, जिस तरह वर्च्यूज के केस में था. सो इवन इफ ही इज डूइंग दैट इन मॉडरेशन, इट्स स्टिल रॉन्ग, इट्स स्टिल ब्लैक एंड वाइट, इट डजंट हैव अ ग्रे एरिया लाइक इन द केस ऑफ वर्च्यूज. So if he go continues to go down that path, so basically if you find something better than good, better than truth, better than honesty, better than justice, better than universal good, a form of the good in Plato's sense, so then that person would believe that thing to be the ultimate good. क्योंकि I believe कि our selfish goods, our selfish pleasures, they make us think कि अच्छा हम एक path पे जा रहे हैं और हमारी पूरी soul corrupt हो चुकी हुई है, and then we not care about the good anymore because we haven't found the good. We just believe, like अभी book 4 के अंदर अगली किताब में हम बात करेंगे about parent goods and ultimate goods or pleasures of the soul and all of that. तो वी हैव नॉट टैप्ड इनटू दोज डोमेन्स ऑफ प्लेजर, तो इसलिए हम उन्हीं उसी साइकिल ऑफ प्लेजर में फंसे रहते हैं कि अच्छा, क्योंकि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज कि जो जो रॉन्ग थिंग्स है ना जिनमें हम फंसे हुए हैं और हमारी सोल करप्ट हो गई, लाइक एग्जांपल यू गिव, इस सिनेरियो में जो प्लेजर्स एसोसिएटेड हैं इन चीज़ों के साथ, इन इन क्राइम्स के साथ, दोज आर वेरी लोली प्लेजर्स. तो वी ओनली कंटिन्यू टू बी बाउंड टू सच साइकिल्स इज बिकॉज वी हैवंट डिस्कवर्ड द राइट प्लेजर्स. तो या व्हाट एंड वुड बी टू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मे बी वो कभी पकड़ा ही ना जाए इंसान, ही ऑलवेज गोज अननोटिस्ड, मे बी ही डाइज नोइंग कि अच्छा शायद मैंने गलत नहीं किया, मुझे किसी ने पकड़ा ही नहीं कभी, मेरी मुझे पनिशमेंट ही नहीं मिली, तो शायद मैंने बुरा नहीं किया, शायद मैंने सही किया. बट डज दैट मैटर? क्योंकि इंट्रिंसिकली देयर इज ऑलवेज एन इनहेरेंट मोरालिटी टू समथिंग. अगर उसने एक बुरा काम किया तो वेदर और नॉट वो कार्मा वाला सिनेरियो हो, वेदर और नॉट ही वाज पनिश्ड, ही वाज स्टिल इन द बैड. अगर आप आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट में नहीं भी चाहते, आई बिलीव कि if you're doing something bad, so it's corrupting your soul, and if you're fool enough to not recognize it, it will only get harder and harder for you to recognize it. एक पॉइंट आ जाएगा कि उसके बाद आप कहोगे कि व्हाट्स लेफ्ट, क्यों ही रिकग्नाइज मैं करूँ, आपकी वो कॉन्शियस अवेयरनेस में वो चीज़ आएगी नहीं. सो दैट इज, आई थिंक सो, वेरी टेरिबल एंड फॉर सच अ पर्सन. Okay, let's go towards Abdullah chapter 6. Notebook 6, chapter 6. Okay, so yes, इसमें डिस्कस करता है एरिस्टोटल द राइट एटीट्यूड, our right attitude towards uh, virtues and towards evil. जैसे कि यहाँ डिस्कस करता है एरिस्टोटल की करेज जो है, बहादुरी जो है, इट इज द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ फियर and the feeling of confidence. It is basically what we choose to fear and what we not choose not to fear. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन जो है, अगर एक मॉरली एक्सीलेंट पर्सन या एक वर्चुअस पर्सन होगा, वो he would not fear adversity, or he would not fear any kind of any kind of pain in the face of injustice. But at the same time, that a virtuous person would have a fear of God inside of him. So basically, fear, as we see, is an evil, but our right attitude towards it can is you can say is uh, shows that we are morally excellent or not. What do you have to say about the but Abdullah, as we already discussed in book number 2, हर जो ईवल है उसको हम उसको उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ मीन या गोल्डन मीन नहीं लग सकता. जैसे कि वी टॉक्ड अबाउट अटेम्प्टिंग मर्डर फॉर मर्डर. एग्जाम्पल. अब यूँ ही कर सकते हैं यार, चलो महीने के 30 कत्ल नहीं, चलो मैं 5 कत्ल कर लेता हूँ.
it's much better. So yes, so it only applies to certain evils. जैसे कि as over here we discussed the feeling of fear, the fear of shame makes a person decent, or at the same time the fear of death, or you can say uh, basically fear of physical pain can make a person coward. Do you have anything to add over here, Abdullah? यार एक रिपीटिंग नोट है ये गोल्डन मील वाला जो एरिस्टोटल बुक वन से ना बार बार रिपीट कर रहा है एंड राइटफुली सो क्योंकि जो एग्जांपल्स देता है पहले उसने बात की अबाउट डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड और पेरेंट गुड एंड बैड फिर वो बात करता है अबाउट एक्शन चॉइस डिलिब्रेशन और ये जो स्पेसिफिक चैप्टर्स के एंड पे वो दोबारा गोल्डन मीन को ला के रीआइट्रेट करता है सो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं गोल्डन मीन वाली वी डिस्कस्ड दिस एट लेंथ इन इन द सेकंड बुक की एपिसोड जो लास्ट एपिसोड था तो देयर इज नथिंग यूनिक व्हिच आई वुड देयर इज नथिंग यूनिक व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड हियर टेम्परेंस की वो दोबारा से बात करता है टेम्परेंस इन दोज थिंग्स जो कि टेम्परेंस इन एवरीथिंग बेसिकली क्योंकि I think so. If I'm not wrong, he mentions about canceling out the virtues, sorry, vices by approaching the temperance वाला route कि आप उनको कम करो and then you abstain from them totally. और फिर वो golden mean की बात करता है and yeah, I think so. The book three ends here. If there's something I'm missing, तो do add on. Yes, Abdullah, I just want to discuss chapter 8 over here. I'll just quickly take 10 to 15 minutes and I just finish book 3 over here. Chapter 8 of book 3, Aristotle discusses about 5 characters which are similar to that of courage. First of all, he discusses confidence. Confidence एक इंसान के अंदर एक बिलीफ होता है that वो he can endure pain, but it is different from courage because इसके अंदर fear वाला element नहीं होता. Confidence जो है, confidence eliminates fear. Second, he discusses about endurance. Endurance का जो character है, it resembles courage in the way that you can say it is the ability to endure pain without complaining. बट इसमें एक फियर का फैक्टर होता है एक इंसान के अंदर, और बिकॉज ऑफ दैट फियर देयर इज नो रिस्क टेकिंग इन दिस फैक्टर. थर्ड है हाई स्पिरिटेडनेस. दिस इज द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस आप कह सकते हो. एंड दिस इज बेसिकली इन द पर्सन हु इज इन अ पोजिशन ऑफ पावर. एक जो एक हाई स्पिरिटेड पर्सन होगा उसके अंदर रिस्क टेकिंग की एक आप कह लो क्वालिटी होगी, और उसका जो मेन फोकस होगा, हिज मेन फोकस वुड बी अ पर्सनल ग्लोरी rather than the good, rather than the you can say universal good or good for all. उसका जो मेन पर्पस होगा, it would be just to obtain glory rather than the true good for his people or for the group he's leading. Number four is bravery. Bravery resembles courage in a sense because it is the willingness to face danger or face death or face fear in pursuit of a noble cause. और इसके अंदर भी रिस्क टेकिंग वाला एलिमेंट है, बट लास्ट टाइम जो हमने हाई स्पिरिटेडनेस जो डिस्कस की थी उसमें रिस्क टेकिंग का एलिमेंट था, बट इट वाज अ सेल्फिश एलिमेंट. बट इन ब्रेवरी वी हैव हाई we have risk taking element as well, and we have the focus of good for others as well. It is not selfish, it's for all people. So the bravery is a bit noble than high spiritedness. Five is perseverance. This is also similar to courage in terms of lack of fear, or मगर it is opposite to cowardness basically. Perseverance इंसान को it enables the character to stick to his, you can say, stick to his course or stick to his routine in spite of facing hardships or burdens along the way. इसके अंदर रिस्क टेकिंग का एलिमेंट भी मौजूद है, बट इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन अचीविंग द गोल rather than ending his suffering. So yes, there were just five these characters that were similar to courage.
और क्योंकि यहाँ एरिस्टोटल इसको इसलिए डिस्कस करें बिकॉज ही इज गोइंग टू डिस्कस करेज अगेन in chapter number 9. Over here, Aristotle says कि to courage is related closely to pleasure and pain because it involves our willingness. हमारे अंदर willingness वाला element होता है कि हम courage को accept करें अपने या फिर courage को carry करें या ना करें. We can we accept courage with the feeling of enduring pain because we are choosing to endure pain. और अगर we but at the same time we are also sacrificing our comfort for the greater good, so that is why courage is closely related to the pleasure and pain. Both pleasure kya hai pleasure, you can say pleasure of obtaining the greater good, but also suffering from the pain or discomfort while achieving that greater good. आगे जाके बुक नंबर 10 में एरिस्टोटल डिस्कसेस अबाउट टेम्परेंस एंड प्लेजर. यहाँ जाके आप ये कह सकते हो कि दोबारा वही गोल्डन मीन या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ मीन डिस्कस करता है एरिस्टोटल. एरिस्टोटल कहता है कि जो टेम्परेंस है, एज वी डिस्कस्ड इन प्लेटोस डायलॉग एज वेल, अब्दुल्ला फेडो फेडो था, आई थिंक सो इट वाज फेडो, जिसमें हमने टेम्परेंस को डिस्कस किया था. एरिस्टोटल कहता है यहाँ कि जो टेम्परेंस इज बिटवीन एक्सेस ऑफ indulgence in pleasure and between the deficiency as well. तो हम बिल्कुल ही प्लेजर या फिर प्लेजर में इंडल्ज हो जाएं या बिल्कुल ही प्लेजर ना लें, उसके बीच का जो है एक या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ माइंड अगर हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, इट वुड बी टेम्परेंस. अगर एक टेम्परेट मैन है, he would seek pleasure in moderation, and he would seek pleasure in accordance with his reasoning and with his judgment. He would not indulge in pleasure. आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्फ इंडल्जेंस एंड प्लेजर क्या कर देती है इंसान के साथ. सो अब्दुल्ला, मैंने यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन डिस्कस करनी थी जो मैंने खुद खुद एक इस तरह का ये जो पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 रीड करके मैंने खुद लिखी थी कि abundance of tragedy, as you already told, abundance of tragedy leads to insensibility, while the lack of tragedy leads to self-indulgence. What do you think about that? Abundance of tragedy leads to insensibility. Deficiency of tragedy leads to self indulgence. Yeah, yeah, I agree. If I actually got what you wrote, in the sense ke if you're there are many outcomes, right? If tragedy has never came your way, तो आप काइंड ऑफ इस तरह हो जाते हो कि अम, यार आपकी वो ना कंपस नहीं सही तरह बिल्ड हो सकता, इन द सेंस कि एक इंसान है, ठीक है, उसका यार मैं ये बड़ी अजीब सी मिसाल हो जाएगी, लेकिन फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसकी he has not fallen in love in his youth, but if but he does so in his early 20s, आप कह लो in his year 23, 24, and he does fall in love, right? और then he gets his heart broken. तो उसका जो रिएक्शन होगा ना टू दैट apparent tragedy, it would be much more uh, uh, had he not gone through that in his youth. But on the other hand, a person who has gone through that in his, you know, teenagers or whatever, उसका उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा आप कह सकते हो मेच्योर हो या ज़्यादा कल्टिवेटेड हो. In the same sense, any kind of tragedy, देखो इसमें वो भी आ जाता है ना, मैटर बिटवीन पेन एंड सफरिंग. Pain is kind of, suffering and pain is not the same thing, right? The father cannot be the son, nor can the son be the father. Suffering is your
approach towards experiencing pain, while acceptance is the other choice towards experiencing pain. तो जो इंसान has not been acquainted with enough tragedy in his life, तो at the slightest intensity of pain that man would suffer. But agar तो he has gone through regular intervals of pain throughout regular intervals of time, so he would be much acquainted with it, to the sense कि he would not suffer at this slightest of आप कह लो experiences of pain. If I got what you said, so that is my response to the first line. The second, you said कि while deficiency of tragedy leads to self indulgence, कि आप अपने गम खुद क्रिएट कर ले, तो ये भी पहली पहली बात से आई थिंक सो लिंक करती है, इन द सेंस कि इफ यू डू नॉट नो व्हाट एक्चुअल पेन इज, व्हाट एक्चुअल सफरिंग इज व्हिच एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड। लोगों के प्यारे मर जाते हैं कोविड में, हमने सबने देखा, अभी सैलाब आया उसमें देखा, अभी अर्थक्वेक आया तुर्की वाली साइड पे उसमें देखा। If you do not if you're not acquainted with those kinds of pain, the actual instances of tragedy, तो आप फिर यही होगा ना कि आपका दिल टूट गया, आप कहोगे यार अच्छा मैं नस काट रहा हूँ अपनी, या ये हो रहा है या वो हो रहा है। तो अगेन, most of what you say that you go through is of your own creation, so you that leads only to self indulgence if there is a deficiency of tragedy. Again, I might be wrong, तुमने जिस context से लिखा है that might be totally different. Abdullah, you got it pretty right. Uh, but yes, yeah, the later part that you said, कि ज़्यादातर लोग they don't really face true tragedy, but they romanticize tragedy. They try to romanticize the tragedy, small tragedies they face, small or very few of a few tragedies that they have faced throughout their life. Like when I visited Pakistan, and I was sitting in my friends, I was really surprised to hear from them that what their tragedies were. Their tragedies were that they got their heart broken in age of 18, or uh, their phone got stolen or something happened. But in terms of different people, yes, मेरे साथ में ही भी फील किया कि जिन लोगों की लाइफ में ज़्यादा ट्रेजिडी होती है, they don't really like to discuss their tragedies, or they basically become insensitive towards tragedies. Insensitive तो नहीं कह सकते, but you can say they know in themselves that this might too pass. But the person who has been living luxurious life, जब उसके बाद थोड़ी सी भी tragedy befall होती है, he starts complaining and whining because he hasn't feel tragedy in a while. So because he has been indulged in his desires so much that he forgot the pain part of his life. That was what that's why I wrote this line after reading chapter 11. So what do you I think like it. that? Yeah. So yeah, I think so. We should. इसके बाद chapter 12 है. 12 में भी basically वो doctrine of mean, he just keep repeating it again and again. So yes, basically अगर हम इस पूरी book number 3 को precise करें, it's all about moral responsibilities, our moral compasses, our choices, our our processes of deliberations, और हमारा जो एक नज़रिया है टूवर्ड्स ईवल एंड टूवर्ड्स वर्चुअसनेस, उसको डिस्कस किया है अरिस्टोटल ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और साथ में ही हैज़ ऑल्सो गिवन अ पाथवे फॉर लेजिस्लेटर्स to punish voluntary, involuntary, and non-voluntary acts accordingly. Chapter number 2 में book 3 के। So yes, it was a very good chapter, Abdullah, because while I was reading these chapters, I had different kinds of thoughts popping up in my head, which I forgot most of them, which I was like, oh yeah, this could happen as well, this could happen as well. But the problem is that वही होता है जब आप एक चीज़ रीड कर रहे होते हो, उस वक्त आती हैं और बाद में फिर आप उनको भूल जाते हो. But for the next time, I would try to write them down and we would discuss those things in brief. And because this is what this podcast is all about discussing our thoughts on philosophical textbooks. Abdullah, do you want to add anything before we wrap up? Again, वही वही बात कि
वी ट्राई टू आवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी कि हमसे इतना समराइज कर दें सब कुछ। मैं आई पर्सनली फॉरगॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले निकोमेकियन एथिक्स पढ़ी थी। मेरा आजकल इट्स लाइक आई हैव गॉट टू मच ऑन माय प्लेट इन द सेंस कि टाइम नहीं मिल पाता टू इवन। यूजुअली व्हाट आई डू इज़ कि मैं किताब पढ़ लेता हूँ, इवन इफ आई हैव रेड दैट बिफोर, लाइक प्लेटो हम लोग कर रहे थे इन द लास्ट सीरीज। आई हैव रेड प्लेटो लॉन्ग अगो, लेकिन आई रिव्यूड द एंटायर बुक्स बिफोर द पॉडकास्ट हैपेंड, बट आई डिड नॉट रिव्यू दिस चैप्टर। So you summarized all of it pretty well. But to the readers, Nicomachean Ethics, I would suggest, I don't suggest to read all of Plato or all of Aristotle, लेकिन Nicomachean Ethics everyone should read along with the metaphysics. तो even though हमने एक तकरीबन 50 मिनट की एपिसोड बनाई है, it would be much better कि अगर आप एक इसके deeper insight चाह रहे हो तो you go and read the book yourself. And yeah, we'll continue with the next book, book 4, in the next episode. थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, एज ऑलवेज। और यहीं यहीं हम अपनी बुक 3 को रैप अप कर दें, और नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद बुक 4, और इफ बुक 4 is short, we will come with book 4 and 5. Thank you very much, or till then take care, Allah Hafiz. Hafiz.